नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम हो। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 31 मार्च को हमने डीएफएस के पास एक आरटीआई लगाई थी रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन के संबंध में कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए, और उसका रिप्लाई हमें आ गया है। लेकिन कुछ संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि जो साइट है जहां से व्यू स्टेटस देख सकते हैं वो स्टेटस खुल ही नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। कुछ हो सकता है सर्वर डाउन हो या कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे पास उसका एक रिप्लाई का हार्ड कॉपी आया है। उसके लिए मैं अपडेट दे रहा हूं, और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाले हैं वो मैं सिस्टम ओपन होने के बाद या आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट ठीक से काम करेगी तो मैं आपको शेयर करूंगा। 31 मार्च को मैंने जो आरटीआई फाइल किया था उसके जो क्वेरीज थे 1 से लेकर 8 तक, उन्होंने समराइज करके जैसा जवाब दिया है। लेकिन आपको रिवाइवल के लिए, मेमोरी के लिए मैं बता दूं कि मैंने सीरियल नंबर 1 पे बैंक वाइज पेंशन फंड पोजीशंस एज ऑन 31 मार्च 24 ऑफ ऑल पीएसयू बैंक्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। नंबर 2 सीरियल नंबर था द मेथोडोलॉजी एंड द फार्मूला adopted for updation of pension of PSU bank pensioners along with each bipartite settlement and joint notes in operations since introduction of pension scheme for bank employees with effect from 1st January 86 in line with the CCSP Regulation 1972 and RBI Employees Pension Scheme. Third, serial number records of correspondence made by DFS, Government of India with all PSU banks under Government of India undertaking for non-implementation of Regulation 35(1) duly amended by DFS in 2003 and Regulation 56 of the BPR 95, a subordinate legislation duly notified under Gazette notification by Government of India. And fourth, it was information regarding compliance of statutory requirements of all PSU banks under Government of India undertaking with regard to mandatory contribution of PSU banks towards any shortfall of required pension funds positions based on year-to-year reports of actuaries as per provisions of BPR 95. Serial number 5, information regarding non-compliance of statutory requirements of all PSU banks under Government of India undertaking to utilize pension fund only to meet out pensionary and the connected benefits and not to divert pension funds balances for other purposes whatsoever. 6th point was copies of the written cognizance by DFS, Government of India, of countrywide dharnas and agitational programs run by various pensioner organizations association since January 23 onwards. 7th, names of the bank pension organization association recognized by Indian Bank Association for talks and discussion relating to the issues of pensioners and getting invited for talks on matters relating to bank pensioners. And the last, copies of the directives issued to PSU banks under Government of India undertaking not to consider the allowance such as a special allowance, even attracting dearness allowance by default, along with basic pay without performance or discharge of any specified duties not to be considered for terminal and the superannuation benefit. ये 8 पॉइंट रेज किए गए थे, और उसके रिप्लाई में जो डीएफएस ने जवाब दिया है वो मुझे एड्रेस करते हुए लिखा है। Information sought by Sri D.K. Srivastava under Right to Information Act 2005 regarding, Sir, please refer to your RTI applications bearing number so dated 31st March 25 and 29th March 25 respectively, and the reply is as under. First query number 1st to 8 reply सुनिए। No specific information such as document with a specific letter number, date, reference of IR section have been sought by you. Under RTI Act, CPI was required to provide information as it exists in the record and not supposed to create, collate,
collect or interpret information or to furnish replies to situational queries in response to an RTI applications. Queries, clarifications, opinion are not covered under Section 2F of the Right to Information Act 2005. In absence of a specific letter number dated of IR section, no material information specific to queries could be identified, traced in the records of IR section, DFS. नेक्स्ट पैरा जो इंपॉर्टेंट है वो सुनिए. ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव मैनेजरियल ऑटोनॉमी इन डिसाइडिंग ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज रिलेटेड टू द बैंक्स एंड दे आर independent public authorities under RTI Act. Hence, you may approach concerned PSB bank directly for specific information concerning them and also refer their rules, regulations, guidelines in the matter. If required, meanwhile, RTI application has been partially transferred online to PIOs of all public sector banks for necessary action as per the provisions of RTI Act. एक तरफ तो ये बात होती है कि HR मैटर में सारे बैंक इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पेंशनल इशू हैं वो DFS से ही तो गाइड होते हैं. और दूसरी बात इन्होंने लिखा कि RTI application has been partially transferred online to PIOs of all public sector banks for necessary action as per the provisions of RTI Act. इन्होंने उसका पार्शियल पोर्शन सारे बैंकों को भेजा है और सारे बैंकों की तरफ से भी मेरे पास रिप्लाई आ रही है, लेकिन ये पता नहीं कि कितने बैंकों की आ गई. कारण यह है कि आज वो मैंने बताया कि RTI ऑनलाइन का प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने के कारण से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि किस बैंक के द्वारा रिप्लाई आया है. यानी कि DFS ने साफ साफ एक तरह से डिनाई कर दिया और किसी बात का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया. और बैंकों द्वारा रिप्लाई जो आ रहा है उसको मैं देखने के बाद अगर प्रॉपर फंक्शनिंग होती है तो मैं आपको कल शेयर करता हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते.